On mute. Now getting my voice well? Yes, sir. Yes. Good evening, everybody, once again. And I'm sorry for delaying lecture because I was busy, stuck with some other work and couldn't complete it within time. So that's why I've decided to take over lecture at 5:30. So sorry for that. And just let's go ahead. We'll continue with the topic. What we were discussing in last lecture. Last lecture we were discussing states of matter or Winnet variable. In this chapter, we discussed gaseous state mode. Or in last lecture, what we have discussed, we are here with the core concept of this chapter, that is nothing but the gaseous laws. So, in last lecture, we have seen what are the gaseous laws. Gaseous laws, nothing but these are the laws which gives the relation between pressure, volume, temperature, and number of moles. And that is nothing but you can say these are nothing but the gaseous laws. And here in the chapter, we discuss these gaseous laws well. And there are 4 to 5 gaseous laws what we discussed. Law number 1 is nothing but you can say Boyle's law, which gives the relation between pressure and volume. Law number 2, which is nothing but the Charles law and gives the relation between temperature and volume. Law number 3, Avogadro's law. Avogadro's law gives the relation between pressure and temperature. And next, nothing but you can say, that is you can say Lsx law. And Avogadro's law gives the relation between number of moles and volume. So that is, and then finally you can say we can have the ideal gas equation. Clear with this? So in last lecture, we have discussed the Boyle's law very well. So according to Boyle's law, for a fixed mass of a gas, volume is inversely proportional to pressure. Or you can say vice versa, pressure is inversely proportional to volume at a constant temperature and number of moles. We have seen the mathematical deduction for this law, Boyle's law. And we also seen the alternative statement, that is product of pressure and volume remains constant. Product of pressure and volume remains constant. That is also what we have seen in Boyle's law. Because of Boyle's law, we also seen the relation between density and mass. That is also redefined, and we have also seen the graphical representation of Boyle's law. Second law we have started with the Charles law, and Charles law gives the relation between temperature and volume. So simply for the understanding, I stated the law, which is not for the examination, just for the understanding. Volume is directly proportional to temperature. Okay, this is for understanding, not for exam. Exam के लिए अगर law पूछेंगे तो उसका statement अलग है, वो मैं second बताऊंगा. पहला statement understanding. Volume is directly proportional to temperature. So किसी भी gas का volume is directly proportional to temperature. That means if temperature increases, volume also increases. If temperature decreases, volume also increases. So in that sense, what we can say, they are related. Temperature and pressure are related. If temperature increases, volume increase हो रहा है. Temperature increases और volume भी decrease हो रहा है. And उसका example देखा हमने, that is bursting of the tire is the example of that what we have seen here, है ना? So gas के लिए हमने वो example देखा. Now उसी law को हमने scientific statement में discuss किया था. और scientific statement में यह था कि as a temperature increases, volume of gas also increases. With the temperature, volume of gas also increases. But for every degree rise in temperature, how much volume increases? Or for every degree fall in temperature, how much volume falls down or decreases? That was the big question, and that has been answered by the Charles law. Charles ने इसे explain किया, इसी को answer किया. So according to Charles law, volume of a given mass of a gas, है ना? Volume of general formula में लिखा था, यहाँ पे नहीं लिखा है. Volume of a given mass of a gas increases or decreases, यहाँ पे plus or minus था, है ना? General formula. The volume of a given mass of gas increases or decreases by 1/273 of its original volume for every degree rise or fall in temperature. This statement is given in your textbook, where you can read it. That is, for a given mass of a gas, volume is increases or decreases by 1/273 of its original volume for every degree rise or fall in temperature. That is for the Charles law. So Charles law के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. हमने जो 2 सेक्शंस यहाँ पे किए थे, दिस इज द सेक्शन जिसके अंदर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया. सो इफ टेम्परेचर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो वहां पे प्लस यूज करते हैं. ओरिजिनल वॉल्यूम था V0, नया वॉल्यूम है V1, तो ओरिजिनल वॉल्यूम के अंदर प्लस V0 इंटू 1/273 इंटू 1 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज हमने टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया था. यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ाया था, जस्ट यहाँ पे जो T डिग्री था उसको 2 से रिप्लेस किया, बाकी सब सिमिलर है. यहाँ पे मतलब 3, 4 ऐसा करते करते हमने टेम्परेचर 273 से बढ़ाया, तो वी गॉट दिस वन, 273 से बढ़ा तो वॉल्यूम बिकम्स डबल. तो ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है, ये कॉलम इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि अगर हमने किसी भी गैस का टेम्परेचर 273 से बढ़ाया तो दैट वॉल्यूम बिकम्स एग्जैक्टली डबल.
वॉल्यूम क्या होता है एग्जैक्टली डबल होता है. So twice V0. V0 was the initial volume and it becomes twice V0. Volume becomes exactly double when temperature is increased by 273 degrees Celsius. Or this column clears or indicates that if temperature decreased by 1 degree, so here is the minus. Decrease के लिए minus है और increase के लिए plus है. ये तो clear हुआ. So temperature is decreased by 1 degree. Don't write minus 1 degree Celsius. Write decrease by 1 degree Celsius. Minus 1 degree Celsius अलग है और decrease by 1 degree Celsius अलग है. So temperature is decreased by 1 degree Celsius. So here V0 minus V0 into 1 upon 273 into T degree Celsius को 1 आएगा. Okay, so we can put it 1 1 1. So यहाँ पे हमें 1 put करना है 1 degree Celsius. यहाँ पे हमें 2 put करना है because temperature is decreased by 2 degree Celsius और temperature is decreased by 273 degree Celsius. So finally initial volume था V0 और V0 minus 2 का तो volume becomes 0. इसका मतलब है अगर हमने temperature 273 से कम कर दिया तो हमारे गैस का वॉल्यूम 0 बनता है. एंड लास्ट लेक्चर में ये भी बताया कि दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंडीशन. इट इज अ सिंपली इम्पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द गैस टू एक्वायर द जीरो वॉल्यूम. जीरो वॉल्यूम मतलब गैस गायब हो जाएगा और इट नेवर हैपेंस. जैसे मैंने कल बताया कि अगर हम वाटर वेपर्स लेते हैं और वाटर वेपर्स को कंडेंस करते हैं तो वाटर वेपर्स को कंडेंस करने के बाद हमें वाटर मिलेगा लिक्विड फॉर्म. वाटर का और टेम्परेचर निकाल लेते हैं तो हम आइस स्टेट में चले जाएंगे और आइस का कुछ तो वॉल्यूम होगा. भले वाटर वेपर्स का वॉल्यूम 10 लीटर था लेकिन आइस का वॉल्यूम कम से कम whatever some cubic centimeter तो होगा, like that. So in that sense volume can't be a zero for any of the gas, and this is very hypothetical condition. That means this temperature is difficult to achieve, or even if we achieve that temperature, it's difficult for each and every gas to acquire the zero volume. So we'll have the graphical representation of this one where the Kelvin scale starts. It's very important. So this is the charge law. So let's come to the graphical representation of the charge law. Okay, so देखिए फॉर्मूला हमारा ये था चार्ज लॉ का. चार्ज लॉ के हिसाब से V1 is equal to V0 plus or minus V0 into 1 upon 273 into T degree Celsius ml ऐसा है. ठीक है, this is the formula. Hope so you are able to see the formula well. So V1 is equal to m जाता है. Now the thing is that when we have the graphical representation, let's have the graphical representation here. So this is the graph where we can have the graphical representation. This is 0 points. This is, you can say, x-axis, and this is, you can say, y-axis. Okay, so x and you can have y-axis. Now x-axis पे हम लोग लेते हैं, that is, you can say, temperature लेते हैं. So this is 0 degree Celsius. Suppose this is 100 degrees Celsius. Suppose this is 200 degrees Celsius. Suppose this is 300 degrees Celsius. सारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में. तो इस तरफ this will become minus 100 degrees Celsius, minus 200 degrees Celsius, and here minus 300 degrees Celsius. So on x-axis we have taken a temperature scale. So that is, you can say this is minus and this is a plus positive. No doubt. Clear? Okay. Now ठीक है. और when we are talking about y-axis पे लेते हैं हम लोग volume. So y-axis पे we are taken volume and here we are taken temperature. Okay. So volume अगर बात करते हैं, suppose this is 10 ml, this is 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60, 70, 80 ml, like that. Generally scaling इस तरफ होता है. So we can have minus 10, minus 20, minus 30, minus 40, minus 50, minus 60, minus 70, and minus 80 ml. That is volume in ml. So यहाँ पे we have taken volume in ml on y-axis, and here we have taken temperature in degree Celsius. According to charge law, suppose हमारे पास कुछ गैस का वॉल्यूम 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 ml है. गैस का वॉल्यूम हमारे पास 20 ml है. तो देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, और हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर की. ठीक है ना. अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उस टाइम हमारा गैस का वॉल्यूम है 20. नाउ अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते तो दिस वॉल्यूम विल इंक्रीज, और अगर हम टेम्परेचर कम करते तो वॉल्यूम विल डिक्रीज. दोनों होगा.
एवरी डिग्री राइज के लिए टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एवरी डिग्री फॉल के लिए टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि दिस इज द टेम्परेचर जो बढ़ता जाएगा और हियर यू कैन से 273 समथिंग यहाँ पे आता है, 273 300 के पहले आएगा और 273 पे दिस वॉल्यूम 20 वॉल्यूम बिकम्स एग्जैक्टली डबल, सो दिस इज 40, तो यहाँ पे देखिए दिस इज द 40, इट हैज अचीव्ड द 41, ये 40 अचीव करता है। दिस इज द हाउ द वॉल्यूम इंक्रीज, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सो ये देखिए ये 40 है यहाँ पे और ये 273। सो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते गए वॉल्यूम बढ़ता गया और 273 पे, यहाँ पे देखिए 273 पे दिस वॉल्यूम बिकम्स एग्जैक्टली डबल, 40 ml बनता है। जो इनिशियली 20 ml वॉल्यूम था, ये सारे वॉल्यूम ml में है, वो 40 ml बनता है। गॉट इट। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, मतलब इस तरफ जाएंगे, टेम्परेचर 0 था तो उसको माइनस करते जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। सो हमें टेम्परेचर जैसा माइनस करते जाते हैं वैसा वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। दिस इज द 273, this is 273, this temperature is 273 degrees Celsius, 273 more exactly देखते हैं तो 273.15 ऐसा है, that more exact figure आप देखते हो तो 273.15 Kelvin ऐसा ही टेम्परेचर। so this is the scale, देखिए this is the scale। so now ये जो हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। here is the point where we are meeting। सो ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है अभी इस पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -273 और उसका y कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट पे है क्या, y कोऑर्डिनेट पे वी हैव टेकन वॉल्यूम। तो ये पॉइंट ये दर्शाता है, ये पॉइंट ये बताता है यहाँ पे कि अगर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं, कम करते जाते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वॉल्यूम मस्ट बिकम 0, वॉल्यूम मस्ट बिकम 0 and this is the hypothetical condition. This is a hypothetical condition for each and every gas. It should acquire some volume. Zero तो हो नहीं सकता, and that's why this is called as an absolute condition, and where the Kelvin scale start, and this point is called as 0 Kelvin. इसे कहा जाता है 0 Kelvin। जैसे हम लोग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे शुरू होता है, लेकिन केल्विन का स्केल यहाँ पे शुरू हो जाता है। जैसा कि वो पुराने जमाने के किसी का तो एक शेर माना जाता है ना, किसी तो फिल्म का डायलॉग है, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होते हैं, जहां पे वॉल्यूम 0 होता है वहीं से केल्विन स्केल शुरू होता है। समझ रहे हैं आप लोग, जहां पे वॉल्यूम 0 होता है किसी भी गैस का वहीं पे केल्विन स्केल शुरू होता है। एंड दिस इज नथिंग बट -273.15 केल्विन, ये पॉइंट है जहां पे होता है। तो यहां से 0 केल्विन है, यहां से इधर तक लेकर 273 पॉइंट्स है, एंड दैट्स व्हाई 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन, क्योंकि देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस है और यहां से ये -270 तक जाता है। -273 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज 0 केल्विन। देखिए आप लोग -273 is also called as 0 Kelvin. That is called as 0 Kelvin. So Kelvin scale starts where every gas is expected to acquire 0 volume, and this is a purely hypothetical conditions. Clear with this? Clear with this? Okay. So that is what we can say here. So this is the Kelvin scale start here. Suppose हमारा इनिशियल गैस का वॉल्यूम अगर 30 है, 30, जबकि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, वापस वही होगा, जैसा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। सो दिस इज यू कैन से दिस विल बिकम 60 लाइक दिस। तो ये देखिए 273 पे दिस वॉल्यूम बिकम 60 और यहाँ पे वापस दिस ग्राफ विल जॉइन टू दिस वन, ये यहीं पे जॉइन हो जाएगा। ओके, यहीं पे जॉइन हो जाएगा लाइक दिस वन। ऐसे कितने भी निकाल सकते हैं। हमारे किसी भी गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 20 था, तो 273 पे 40 बनेगा और -273 पे 0 बनना है। हमारा अगर 30 भी है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 60 होगा और कम करेंगे तो -273 पे 0 ही होगा। एंड दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज 0 केल्विन, वेयर केल्विन स्केल स्टार्ट्स। आज की तारीख में हमने बताया आपको जितने सारे केमिस्ट्री में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सारे न्यूमेरिकल के अंदर टेम्परेचर शुड बी यूज्ड इन केल्विन, टेम्परेचर शुड बी यूज्ड इन केल्विन। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इज ऑलमोस्ट आउटडेटेड, इज नॉट इन यूज, नोवेयर इज इन यूज। क्लियर विद दिस? केल्विन है और केल्विन इसी तरीके से, समझ रहे हैं आप लोग? सो दैट इज यू कैन से दिस इज हाइपोथेटिकल कंडीशंस, क्योंकि हम लॉजिकली ये भी समझते हैं कि कोई भी गैस गायब तो नहीं हो जाएगा, जीरो वॉल्यूम तो नहीं एक्वायर करेगा, बट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ता है तो 273 पे अगर डबल हो जाता है, और वो होता है, प्रैक्टिकली होता है डबल, लेकिन अगर माइनस करते जाएंगे तो प्रैक्टिकली इट शुड एक्वायर द जीरो वॉल्यूम, बट मतलब प्रैक्टिकली नेवर हैपेंस, थियोरेटिकली इट एक्वायर्स जीरो वॉल्यूम,
practically it acquires some volume, एक वो solidify हो जाएगा और उसके बाद उसका वॉल्यूम कम नहीं हो जाता है. But where every substance is expected to acquire the zero volume is called as zero Kelvin scale, और यहाँ से लेकर इधर तक 273 होते हैं. इसीलिए हम लोग जब टेम्परेचर इन केल्विन निकालते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन निकालते हैं तो हम ऐसा करते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 उसके अंदर ऐड करते हैं. अभी देखिए आगे जाके मैं कभी अगर गलती से 0.15 नहीं बोलूंगा, ओनली 273 बोलता हूं तो उसका मतलब वही होता है 273.15. याद रखिएगा, बिकॉज़ दिस मोर एग्जैक्ट, दिस फिगर इज 273.15. बोलते बोलते हम लोग सिर्फ 273 बोलेंगे. न्यूमेरिकल में भी आप 273 ओनली लेते हो तभी भी चलेगा. ओके, 0.15 इट्स ओके, वी कैन नेग्लेक्ट, बट एक्चुअल फिगर इज दिस. सो टेम्परेचर इन केल्विन कन्वर्ट करने का हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री नाम का चैप्टर डिस्कस किया था. उसी के अंदर ये देखा था हमने कि टेम्परेचर इन केल्विन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो T डिग्री सेल्सियस प्लस 273. 273 आया कहां से था? ये यहां से आया था. ये 273 ये फैक्टर, ये सो इस पॉइंट से लेकर 0 तक ये 273 फ्रैक्शंस होते हैं जो हमने ऑलरेडी देखे हैं. 273 फ्रैक्शंस होते हैं. इसलिए 0 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और यहाँ पे अगर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो 273 के अंदर उसे ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बिकम टेम्परेचर इन केल्विन. सो इसलिए ये फार्मूला बनता है. समझ रहे? तो टेम्परेचर इन केल्विन का फार्मूला इस तरीके से है. साइंस के अंदर की हर चीज इसी तरीके से प्रूव की जाती है. भले ही आप लोग बाद में जाके ऐसी पीएल लर्न करेंगे, ये फार्मूला लर्न करेंगे, आप बोलेंगे बस इतना ही फार्मूला है टेम्परेचर इन केल्विन का, बट उसके पीछे रीजन है. व्हाई दिस फार्मूला इज लाइक दिस? बिकॉज़ ऑफ चार्ल्स लॉ. गॉट इट? सो होप सो एवरीवन गॉट दिस वन. दिस इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ. एंड नाउ विल डिराइव द स्टेटमेंट. जो अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला स्टेटमेंट बोला था मैंने, उससे हम लोग थोड़ा सा डिराइव करते हैं मैथमेटिकली इसी फार्मूला से. ठीक है, अब देखिए यही फार्मूला है. इसमें से हम लोग प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं, कोई तो एक ले लेते हैं. चलो प्लस का फैक्टर लेते हैं. तो प्लस का फैक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज तो सिर्फ प्लस लेंगे तो क्या आएगा फिर? V1 is equal to V0 plus V0 into 1 upon 273 into T degree Celsius ml. ml ऐसा है. ठीक है, ये आ जाता है. अभी अगर हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है तो V0 एक प्लस है तो V0 कॉमन निकाल सकते हैं. तो इट विल बी V1 is equal to V0 in bracket. ये कॉमन निकाला, V0 दोनों के अंदर है, ये तो मल्टीप्लाइड है ना, तो V0 कॉमन निकाला तो इसके बदले आएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा फिर 1 upon 273 into T डिग्री सेल्सियस. मतलब इधर लिखता हूं मैं T डिग्री सेल्सियस 1 into T डिग्री सेल्सियस ml ऐसा है. ठीक है, अभी इसे तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग. तो V1 is equal to V0 in bracket here 273 plus T डिग्री सेल्सियस upon 273 so ml. जस्ट मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया. 1 plus T upon 273, 1 plus A upon 273 सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से. तो इससे मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया 270 plus T डिग्री सेल्सियस upon 273. Now, but what is this 273 Celsius? 273, okay, 273 is nothing but the absolute temperature. This is nothing but the absolute temperature, which is 0 degrees Celsius. 273 is the absolute temperature, absolute zero temperature. Sorry, only absolute. Absolute zero temperature is this one, 0 Kelvin, but absolute temperature is 273 Kelvin. That is called as 0 degree Celsius. 0 degree Celsius, yeah, and that is denoted by T naught. That is denoted by T naught. T naught is a 0 degree Celsius, or either you can say 273 Kelvin. Okay, 273 Kelvin. ये 273 factor ही है कहाँ से आया? Like this, ये वाला, यहाँ से इधर तक. तो ये 273 Kelvin मतलब 0 degree Celsius, called as absolute temperature. तो absolute temperature is denoted by T naught. यहाँ से आगे बुक में कहीं भी आपको शब्द आएगा, न्यूमेरिकल में आएगा. What is absolute temperature? Absolute temperature is denoted by T naught. ये fixed value. And that is nothing but the 0 degree Celsius, or either you can say 273 Kelvin. Okay, ये होता है. Then what is this 273 plus T degree Celsius? This is, you can say T1. T1 is, जैसे हम अभी निकालते हैं, this is the formula. This is the formula to calculate the temperature in Kelvin. Temperature in Kelvin क्या होता है? Then T degree Celsius plus 273, like this one. So this is nothing but the T1. This is the temperature. So we can put these values here. So therefore this equation becomes V1 is equal to V0 in bracket. Instead of this, we can have only T1. T1 upon, this is nothing but the absolute temperature, T0. Clear? अभी इसे अभी सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा, है ना. तो V1 को इस तरफ भेज देते हैं और ये फैक्टर इस तरफ लेके आते हैं. तो क्या आएगा फिर इधर, यू कैन से V0 upon V1 is equal to T0 upon T1. आएगा. So this is what we can say. इसका मतलब ये है volume is directly proportional to temperature because this is going to be constant. V0 upon V1 is equal to T0 upon T1 is going to be constant. तो अगर
वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होने वाला है. सो इन दैट सेंस वी गॉट दिस वन. इसका मतलब ये है दैट यू कैन से या फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग T1 V1 is equal to T2 V2 like that. इस तरीके से कर सकते हैं. सो किसी तरीके से आप कन्वर्ट करो, इट्स कम टू द सिमिलर वन, इसी तरीके से वो आएगा. सो दैट इज यू कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट, ऑल्टरनेट स्टेटमेंट फॉर चार्ल्स लॉ, जो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था फॉर द अंडरस्टैंडिंग. तो अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो रॉन्ग नहीं है. बट दुर्भाग्य से उसके लिए मार्क्स नहीं दिए जाएंगे बिकॉज दिस इज द ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट. ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है? ओरिजिनल स्टेटमेंट ये है, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट ये क्या बताता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 of its original volume for every degree rise or fall in temperature. This is called as Charles law, and it is this mathematical deduction. Volume is directly proportional to temperature. तो इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है. ओके, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप थोड़ा सा छोटा ग्राफ निकालते हो यहाँ पे. अब देखिए, this is here, this is temperature, this is volume. Volume is directly proportional to temperature. We got this one. This is pressure P1. This one. This is pressure P2. So we can have different graphs. Volume is directly proportional to temperature. Temperature बढ़ेगा तो volume बढ़ेगा. ओके, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा. दिस इज प्रेशर P1, प्रेशर P2, ये कांस्टेंट रहेंगे ना. मतलब प्रेशर में हमने 1 atm दिया था, फिर हमने 2 atm दिया, फिर हमने 3 atm दिया, ऐसे कितने भी कर्व आएंगे, लेकिन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. तो लाइन ओरिजिन से पास होगा, ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होगा बिकॉज़ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर कम होगा. टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा. इन दैट सेंस द दिस इज अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट फॉर दिस चार्ल्स लॉ. क्लियर विद दिस? So these were the two laws जो थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं लेकिन है नहीं है. पहला बॉयल्स लॉ और दूसरा है हमारा चार्ल्स लॉ. So that's all everything about this you can say चार्ल्स लॉ. क्लियर? इसके कारण एक्चुअली चार्ल्स लॉ के कारण डेंसिटी का एक रिलेशन वापस डिराइव होता है, नो डाउट. बट हम लोग वो इसमें देखेंगे, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे. क्लियर विद दिस? सो लेट्स मूव नाउ नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड तीसरा लॉ की तरफ मूव करते हैं. ओके, तीसरा लॉ. पहला लॉ देखा हमने बॉयल्स लॉ, दूसरा देखा हमने चार्ल्स लॉ, और थर्ड लॉ की तरफ मूव करते तीसरा लॉ देखेंगे यू कैन से Lsx लॉ. Lsx law. Lsx law gives the relation between pressure and temperature. Pressure and temperature. Every law gives the relation between specific quantities. So Lsx law gives the relation between pressure and temperature. Pressure और temperature के बीच में relation देता है. Now what is this? सीधा statement है उसका, statement के हिसाब से mathematical form है. According to Lsx law, that is pressure is directly proportional to temperature at constant n and v. At constant n and v. N, what is n? N is number of moles. What is v? Volume. So according to Lsx law, pressure is directly proportional to temperature at constant number of moles or volume, or you can say fixed mass of a gas. Fixed mass of gas बोलते हो तभी भी चलेगा, like this one. So pressure is directly proportional to temperature. मतलब temperature increases, pressure also increases. Temperature decreases, pressure also decreases. That happens over here. So इसे solve करते हैं. So solve करेंगे तो क्या आएगा? P is equal to, instead of this proportional आएगा K into T. ये आएगा. अभी देखिए T सर P कहते हैं तो P upon T is equal to K. इसका मतलब है P1 upon T1 is equal to P2 upon T2 is equal to constant. So इतना ही है Lsx law. क्लियर? सो Lsx law इतना ही है. अभी सिंपल सी बात है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करके देखिए. दिस इज द कंटेनर, ये कंटेनर है हमारे पास और इसको हमने क्लोज करके रखा है. दिस कंटेनर इज बीन क्लोज्ड और इसके अंदर गैस भरा हुआ है. व्हाट इज दैट? गैस भरा हुआ है. अभी इस गैस का P0 इतना प्रेशर है जबकि टेम्परेचर T0 है. टेम्परेचर T0 है मतलब मानो रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस से तब जाके 180 में इतना प्रेशर है, दैट इज P0. अभी हमने इस गैस को हीटिंग किया यूजिंग द बर्नर
we have heated this gas using the burner. We have heated this gas. Gas को जैसे heating करेंगे, these particles will acquire the kinetic energy. उनके motions बढ़ जाएंगे. Because this particle will acquire the kinetic energy and its motion will increase. तो उनके motion increase हो जाएगा. So when its motion increases, जैसे इनका motion increase हो जाता है, it will strike on the wall of container. उनका motion बढ़ेगा, speed बढ़ेगा, तो they will strike on the wall of container. तो पहले जितने collision हो रहे थे wall of container के ऊपर, उससे ज्यादा collision उसके ऊपर हो जाएंगे, ज्यादा collision उसके ऊपर हो जाएंगे, और जितने ज्यादा collision उसके ऊपर हो जाएंगे, उतना ज्यादा pressure आएगा. So जैसे देखिए, जैसा temperature बढ़ा, तो particle का speed बढ़ता है, और जैसे particle का speed बढ़ेगा, तो वो wall of container के ऊपर टक्कर ज्यादा टक्कर देते हैं, मतलब टक्कर हम भी कभी-कभी हमारे डेली रूटीन लाइफ में खेलते हमारा कोलिजन हो जाता है. जानते हैं कोलिजन अगर स्लोली होगा तो अलग बात है, कोलिजन फास्टली होगा तो अलग बात है ना. तो जैसे कि कभी-कभी हमने रास्ते पे देखते हैं कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर का क्रैश देखते हैं हम लोग. तो मानो अगर 2 4 व्हीलर एक दूसरे को क्रैश होते हैं, वो स्लो स्पीड में होंगे तो ज्यादा डैमेज नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्पीड में होंगे तो बहुत ज्यादा डैमेज होगा. समझते हैं, बिकॉज उतना ही प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट होगा. उसी तरीके से ये पार्टिकल कितने स्पीड में ये कंटेनर के वॉल के ऊपर स्ट्राइक होते हैं उसके हिसाब से प्रेशर आता है. सो हीटिंग करने के बाद इनका मोशन बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ता है, कोलिजन बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता है. सो टेम्परेचर जब T0 था तो प्रेशर P0 था. अभी टेम्परेचर हमने T1 बनाया तो प्रेशर भी क्या बनता है, P1 बनता है. इसका मतलब है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, है ना, उतना प्रेशर बढ़ेगा. जिस तरीके से हमने चार्ल्स लॉ के अंदर देखा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उसी तरीके से यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यही एग्जांपल हम लोग बर्स्टिंग ऑफ द टायर के अंदर लेते हैं, है ना. टायर के अंदर जो एयर होता है उसका जितना फ्रिक्शन होगा, जितना गाड़ी चलेगा उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, तो अंदर का गैस के मोशंस बढ़ेंगे, तो वो ज्यादा प्रेशर देंगे. अगर हमारे गाड़ी का टायर उस प्रेशर के साथ विथस्टैंड करता है तो बस नहीं होगा. लेकिन अगर हमारे गाड़ी का टायर उसके साथ विथस्टैंड नहीं करता है, उस प्रेशर को नहीं बेयर कर सकता है, तो वो बस्ट हो जाएगा. इसलिए बहुत बार ऐसा लॉन्ग ड्राइव करते समय जो एक्सपोर्ट लोग होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वो कुछ समय के बाद गाड़ी को रोकते हैं, थोड़ा सा एयर को ठंडा होने जाते हैं, फिर नेक्स्ट जर्नी कर देते हैं. मतलब खुद के लिए तो होता है एज अ ड्राइवर, बट एट द सेम टाइम वो एयर भी जो होता है वो भी ठंडा हो जाता है, तो बर्स्ट होने के चांसेस भी डिक्रीज हो जाते हैं. सो दिस व्हाट हैपेंस. So this is very scientific and very social life what we have here. So that has to be understood. So this is what. So this is simply Lsx Law. Clear one? So what is Lsx Law? According to Lsx Law, simple है statement और उसका mathematical form. इतना ही है Lsx Law. चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ थोड़े से बड़े थे, उनके बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव स्टेटमेंट थे. इसका कुछ नहीं है, सिंपल है. What is Lsx Law? Pressure is directly proportional to temperature. If temperature increases, pressure also increases. If temperature decreases, pressure also decreases. That is what we can say. And this is the formula what we can remember for the Lsx law. Now let's come to the fourth law called as Avogadro's law. So we have the fourth law called as Avogadro's law. Avogadro's law. Okay. Avogadro's law gives the relation between N and V. N and V. What is N? What is N? N. There is some, I think one question asked by Prashant. Let me take this question first. What is the question he has asked? Prashant has asked the question. Okay. So, sir, what does happen when car drift the car? There must be height friction there. Okay. Drifting of car is a bit different concept. Okay, drifting of car is a different concept. That is because of maybe a slippery road, or maybe due to a air pressure which is created below the car. कार के ऊपर होता है, मतलब कार जितना ओवर स्पीडिंग होगा तो उसके नीचे जितना एयर आता जाएगा, that because of that it may drift, or it may drift because of slippery road, या फिर कुछ ऑयल होगा उसके ऊपर, तो because of that motion और friction अगर मैच नहीं होगा, so because of that drifting of the car occurs. So so what's Prashant? What you are expecting from that one? Well, basically, we were taking the example of bursting of the air. That is how the volume of air increases and how the pressure increases and how they are related with the temperature. We are discussing the relation between them. ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं. अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो हम लोग after the lecture we can have one-to-one interaction regarding all the doubts. Clear? So अभी okay, thank you. So शायद हो सकता है इस टॉपिक के बारे में आपको कोई डाउट नहीं है. That is out of the box questions. 100% we'll discuss regarding that. Everyone got it? First we have seen Boyle's law. Number 2 we have seen Charles law, and number 3 we have seen here you can say Lsx law. And number 4 is nothing but the Avogadro's law.
एक्चुअली हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री के अंदर एवोगाड्रोस लॉ को एक तरीके से डिस्कस किया है. एक लॉ देखा हमने एवोगाड्रो और उसका कहना ये था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. Equal volume of all gases contain same number of molecules, or you can say same number of molecules acquire the equal volume. Equal volume, same number of molecules. That is Avogadro. That is Avogadro law. तो जैसे कि हमने तीन कंटेनर देखे थे, है ना? Suppose हमारे पास तीन कंटेनर है अलग-अलग. So this is the first container, this is second container, and this is third container. ऐसे कितने भी कंटेनर ले सकते हैं और सारे एक साइज के. Suppose सब 1 liter के. So it has 1 liter gas, it has also 1 liter and it has also 1 liter. This is hydrogen, this is nitrogen, suppose this is oxygen. There are three different gases: hydrogen, oxygen, nitrogen, and sub 1 liter क्या है, ठीक है? They are filled complete at all the similar conditions, temperature, pressure conditions similar है. So according to Avogadro's law, if volume is equal, the number of moles should be similar. Suppose इसके अंदर n number of moles है, इसके अंदर भी n होते हैं, इसके अंदर भी n होते हैं. वॉल्यूम सेम है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. हाँ, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है. सिंपली दिस रिलेशन कम्स टू दैट. स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. ये हम अच्छी तरह जानते हैं. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड वेरी स्मार्टली दैट in any of the law generally we discuss the relation between two factors. So relation between volume and n. So these two factors must be constant. Okay, pressure and temperature must be constant. So what according to this law, volume is directly proportional to n. Volume is directly proportional to n. So if n is number of moles, v is the volume. If number of moles increases, volume also increases. If number of moles decreases, volume also decreases. So simple law. And according to the statement, ये statement हमने देखा हुआ है. Statement क्या है उसका? Equal volume of all gases contain same number of molecules. Equal volume of all gases contain same number of molecules. This is, you can say, Avogadro's law. Clear? And this is the mathematical statement. So अगर इसे उसी तरीके से सॉल्व करते तो उसको सिंपल है. क्या आता है फिर? वॉल्यूम इज इक्वल टू k into n. k into n आता है. या फिर हम लोग बोल सकते हैं v upon n is equal to k. This is the Avogadro's law. या फिर v1 n1 is equal to v2 n2. Like this. v1 upon n1. इस तरीके से कर सकते. This is, you can say, Avogadro's law. This is according to Avogadro's law. तो एक बात very clear है, मतलब it's a very clear, one thing is very clear. In case of Lsx law or in case of Avogadro's law, you need not to understand or need not to learn more things. So simple, single statement and single mathematical form. Whatever the statement, accordingly is the mathematical form. Whatever is the mathematical form, accordingly is the statement. Clear? So what is Avogadro's law? According to Avogadro's law, equal volume of all gases contain same number of molecules. According to this concept, we can write volume is directly proportional to n. That is number of moles. Volume is directly proportional to number of moles. So at constant pressure and temperature. So ये लिखना पड़ेगा. Otherwise statement आधा रहेगा. So by solving this, we can get this one. This is called Avogadro's law. And here what we have derived? Here we have derived Lsx law. According to Lsx law, pressure is directly proportional to temperature. So if pressure increases, temperature also increases. Temperature decreases, pressure also decreases. That is what we can say Lsx law. Clear with this? तो ये दोनों हमने उसके अंदर डिस्कस कर ली. अभी Avogadro's law के कारण थोड़ा सा प्रेशर डेंसिटी का रिलेशन आता है जो मैंने पहले कहा था कि हम Avogadro's law के अंदर डिस्कस करेंगे. चार्ल्स लॉ के अंदर मैंने बताया था उसे, वो एक बार देख लेते हैं. ठीक है, अब देखिए according to Avogadro's law, volume is directly proportional to n at constant P and V, P and T, pressure and temperature. V is directly proportional to n. अभी इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? V is equal to K n. ये मिलता है. This is equation number 1. But we know what is n. N is the number of moles. N is the number of moles. And number of moles का फॉर्मूला क्या है? W upon m. So W upon m. इस बुक में से m upon m किया है. Okay. So दोनों भी चलते हैं. According to some basic concepts in chemistry, we have seen W upon m. W represent the weight and m represent the molecular mass. Here m represent the mass of the substance and this capital M represent the molecular mass of the substance. So m is the mass of substance, capital M is the molecular mass of the substance. Don't get confused with this. कुछ जगह आपको मास के लिए m मिलता है, कुछ जगह आपको weight मिलता है ना. हम अच्छी तरह जानते हैं mass and weight totally different quantity according to physics, according to gravitational force. Mass of the substance never changes, but weight may change depending upon the position.
बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इसके अंदर ऐड होता है, इसके अंदर वो नहीं होता है. मास इज वेरी फंडामेंटल क्वांटिटी, हमने स्टार्टिंग में देखा है. तो बट फिर भी यहाँ पे हम लोग दोनों उसी तरीके से लेते हैं, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. Mass of the substance upon molecular mass of the substance, weight of the substance upon molecular mass of the substance, this is nothing but the n. We can use this here. So n का वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं. तो V is equal to K M upon capital M. इसे small में कन्वर्ट करते हैं. Small m. Small m is a mass of substance. Capital M is a molecular mass of the substance. ये हम लोग करते हैं. तो m इस तरफ लेके जाते हैं, V इस तरफ लेके आता हूँ, तो क्या आएगा? Molecular mass of substance is equal to K into M upon V. This is equation number 2. Okay. Now already we know very well equation for the density. What is that? We have density is equal to mass upon volume. This is equation number 3. Density is equal to mass upon volume. Can we put this equation here? Instead of this mass upon volume, we can put D. So therefore you can say M is equal to K into D. Putting third in second. Putting third equation into second. We get M is the K. इसका मतलब ये है, that is molecular mass is directly proportional to D. Density is directly proportional to molecular mass. Molecular mass is directly proportional to density. Yeah, density is directly proportional to molecular mass. इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. समझ रहे हैं आप लोग? So this is what we can say. Molecular weight is directly proportional to density. Density and molecular weight they are related with each other, and this is very important to derive the diffusion or rate of diffusion. हमने measurable properties of gases के अंदर डिस्कस किया है. There are some measurable properties of the gases we have discussed, and उस measurable property के अंदर हम डिस्कस किया है कि this density and mass matters a lot. तो तुम्हें से जो भी लोग जेई और नीट का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, सिंसियरली पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये रिलेशन बहुत मैटर करेगा, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर एटलीस्ट एक एमसीक्यूज तो आता ही है नीट और जेई में, और उसके अंदर ये इक्वेशन जरूरी है. दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. ये जरूरी है, वो उसके अंदर आएगा. क्लियर विद दिस? So that is what we can say. 4 of the laws, gaseous laws. कौन से laws discuss किए हमने? बोलिए. Number 1, Charles law. Number 2, Boyle's law. Number 3, Avogadro's law. And number 4 is, you can say, Lsx law. So Boyle's law, Charles law, Lsx law, and Avogadro's law. These are the 4 laws what we have discussed over here. So these are done. Now we have to discuss ideal gas equation. But उसके लिए time लगेगा, तो see you tomorrow with ideal gas equation. Hope so. You got all these laws, and I expect that everyone should learn the laws. But anyhow, you have to mug up these laws. You have to prepare these laws. Tomorrow I will take a oral, and tomorrow Sunday, so we won't be taking lecture. But Monday we'll meet with the oral of these laws. So I expect everyone will be ready with all oral. That is Charles law, Boyle's law, Lsx law, and Avogadro. And furthermore, we can continue with ideal gas equation. Till then, thank you very much. Bye bye.